Namaskar, I am Anand, and you are watching Join for Education. All of you are in the live class of Join for Education in YouTube. Let's start the class. Uh, Today we shall uh, questions of exercise 6.1. This is in the chapter of application of derivative. Let's see the question of exercise 6.1. Let's see the question number 1. This is the question number 1. In question number 1, ask us find the rate change of the area of a circle with respect to radius r when a r equal to 3 centimeter and b equal to 4 centimeter. So question number 1 has two questions, a and b. Let's see the solution. From question it is clear that let's see here ask us what is the dA by r when r equal to 3 centimeter. R equal to 3 centimeter and ask us dA by dr equal to what? Shall we recall the formula of a circle when a equal to what? So let's see here. We know that a equal to pi r square. Now derivative both side with respect to x. Now derivative both side wrt r. So in the left hand side we have d a by dr equal to 2 pi r. Now putting the value of r, therefore dA by dr equal to 2 into pi into the value of r is 3. Therefore, this one will be 6 pi and the unit of A is meter square and unit of r is meter. So, this one will be the answer of this question. Of that, there is no problem to understand the solution. Let's see once again. From question, it is clear that r equal to 3 centimeter. In this question, ask us what is the value of dA by dr, and we know that a equal to area of a circle, which is generally denoted by a, equal to pi r square. Now derivative both side with respect to r. In the left hand side we get dA by dr. In the right hand side it will be 2 pi r. Now putting the value of r,
Then in the left hand side, dA by dr equal to 2 into 5, and the value of r is 3. So after the simple multiplication, we get here 6 pi, and the unit of A is meter square and the unit of R is meter. Therefore, this one will be 6 pi meter square per meter. However, there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the B part of this question. So from question, it is clear that let's see the solution. From question, it is clear that let's see the question. So here r equal to 4 centimeter. So r equal to 4 centimeter and ask us dA by dr equal to what. So we write down here, we know that we A equal to pi r square. Now derivatives both side with respect to r. In the left hand side, it will be dA by dr equal to 2 pi r. Now putting the value of r, therefore in the left hand side it will be dA by dr equal to 2 pi into 4 equal to 8 pi meter square per meter. This is the answer. However, there is no problem to understand the solution of B part of the question number 1. Let's see the question number 2. This is the question number 2. In the question number 2, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 cube centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? So from question, it is clear that dB by dt equal to 8 cube centimeter per second, and ask us dA by dt equal to what when L equal to 12 centimeter. So let's see the solution. From question, it is clear that so dV by dt equal to 8 cube centimeter per second, L equal to 12 centimeter, and ask us dA by dt equal to what. So we know that, recall the formula of the volume of the cube. We write down here, we know that V equal to L cube. So now derivative both side with respect to t. Now derivative both sides with respect to
t. Therefore, in the left hand side, it will be dv by dt. So, dv by dt equal to here will be 3 L square into dl by dt. Now, putting the value of dv by dt and L. Now, putting the values of dv by dt and L. So the next step will be the value of dv by dt is 8 and the value of L is 12 square and dl by dt. Next step here will be or 8 equal to 3 into the square of 12 is 148 into dl by dt. So the next step here will be dl by dt equal to 8 by 3 into 144. So 8 1 ja 8, 8 8 ja 64. So here will be 1 by 54. Unit of L is centimeter and unit of T is second. So dl by dt equal to 1 by 54 centimeter per second. Again we recall. So we write down here again we know that A equal to 6L square. Now derivative both side with respect to T. No derivative both sides WRT T. Then in the left hand side we get here dA by dt equal to here will be 12L into dl by dt. Now putting the values of L and dl by dt. Now putting the values of L and dl by dt. So here will be dA by dt equal to 12 into value of L is 12 and the value of dl by dt equal to 1 by 54. So 3 4 ja 12, 3 1 ja 3 और 18 3 ja 54. Again 3 4 ja 12 and 3 6 ja 18, 2 2 ja 4 and 2 3 ja 6. So here will be 8 by 3 centimeter square per second. So this one will be the answer. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see once again. Sure. This is the solution of question number 2. From question it is clear that dv by dt given 8 cube centimeter per second, L 12 centimeter, dA by dt equal to what? We know that V equal to L cube. Now derivative both sides with respect to T. Therefore dv by dt equal to 3L square dl by dt. Now putting the values of dv by dt and L. So here will be 8 equal to 3 into
S square of 12 into dl by dt. So after the simple calculation, we get 1 by 54 centimeter per second. Again, we recall or know that for the formula A equal to 6L square. Now we are derivative both side with respect to t. Then we get dA by dt equal to 12L into dl by dt. Now putting the values of L and dl by dt, after simple calculation, we get 8 by 3 centimeter square per second. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the question number 3. So here is the question number 3. Now I am going to read the question number 3. The radius of a circle increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. It means that from question it is clear that dr by dt is given and ask us dA by dt equal to what and r equal to given 10 centimeter. So let's see the solution of this question. So we write down here from question it is clear that from question it is clear that let's see here. uh, this is the question number 3. Dr by dt is given and r is also given. So dr by dt equal to 3 centimeter per second. So 3 centimeter per second. R equal to 10 centimeter and ask us dA by dt equal to what. So we know that A equal to A equal to pi r square. Now derivative both side with respect to t. Then here will be dA by dt equal to 2 pi r into dr by dt. Now putting the value of r and dr by dt, values of r and dr by dt. So in the left hand side it will be dA by dt equal to 2 into 5 and the value of r is see here 3. The value of r is 3 and dr by dt is 3 and r equal to 10 centimeters. So we write down 10 and the value of tr is 3. After the multiplication we get here 60 pi and unit of a is centimeter square and unit of time is second. So this one will be the answer. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see once again. So solution from question it is clear that dr by dt equal to 3 centimeter per second, r equal to 10 centimeter, dA by dt equal to what? We know that a equal to pi r square. Now derivative both side with respect to t, then we get dA by dt equal to 2 pi r into dr by dt.
Now putting the value of r and dr by dt, then we get here dA by dt equal to 2 pi, and the value of r is 10 and value of dr by dt is 3. After the simple multiplication, we get 60 pi centimeter per second. So let's see the next question. This is the question number 4. An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? So let's see the solution. From question, it is clear that L equal to dl by dt equal to 3 centimeter per second and L equal to 10 centimeter. And ask us what is the dB by dt. So let's see here. From question, it is clear that question number 4. Let's see the solution. From question, it is clear that from question, it is clear that let's see. dl by dt equal to 3 centimeter per second and L equal to 10 centimeter. dl by dt equal to 3 centimeter per second and L equal to 10 centimeter, and ask us dB by dt equal to what. So we know that we know that v equal to LQ. Now derivative both side with respect to t. Now derivatives both sides with respect to t, then we get dB by dt 3L square into dl by dt. Now putting the value of L and dl by dt, putting the values of L and dl by dt. Here the value of L is 10 centimeter and dl by dt is 3 centimeter. So here will be dB by dt equal to 3 into 10 square into 3. Then we get here 100 into 9 equal to 900. Unit of V is cube centimeter per second. So this one will be the answer. Let's see once again. So this is the solution of question number 4. From question, it is clear that dl by dt equal to 3 centimeter per second, L equal to 10 centimeter, dV by dt equal to what, and we know that V equal to LQ. Now derivative both side with respect to t. Then we get here dV by dt equal to 3L square into dl by dt. Now putting the values of L and dl by dt, then we get here dV by dt equal to 3. 10 square into 3. After the simple multiplication, we get here 900 cube centimeter per second. Let's see the next question. And this is the question number 5.
Now I am going to read the question number 5. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 10 centimeter per second. At the instant when the radius of the circle is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? It means that in this question ask us what is the value of dA by dt, and here uh, a stone dropped into a quiet lake and waves moves in circle at the speed of 5 centimeters circumference. It means that dc by dt is given and r is also given. So let's see the solution. Question number 5. Let's see the solution. From question it is clear that dc by dt equal to 5 centimeter per second, and r equal to 8 centimeter, and ask us dA by dt equal to what? So we know that circumference of the circle equal to c equal to 2 pi r. Now derivative both side with respect to t. So in the left hand side here will be dc by dt equal to 2 pi and dr by dt. Now putting the value of dc by dt and dr by dt we find out here. So write down here. Now putting the value of dc by dt. Now putting the value of dc by dt. So here will be the value of dc by dt is 5. We write down here 5 equal to 2 pi into dr by dt. Therefore, dr by dt equal to 5 by 2 pi. The unit of r is centimeter, unit of time is second. Hope that there is no problem to understand up to this step. Now we recall area of the circle, or we write down here. We know that a equal to pi r square. No derivative both side with respect to t. No derivative both sides
with respect to t. In the left hand side we have dA by dt equal to, here will be 2 pi r into dr by dt. Now putting the value of r and dr by dt, now putting the values of r and dr by dt. So here will be dA by dt 2 into pi, and the value of r is, let's see here, 10 centimeter, and the value of r is 8 centimeter. So we write down here into 8, and the value of dr by dt we find out here 5 by 2 pi into, we write down here 5 by 2 pi. 2 pi cancelled out, then we get here 40, and unit of area is centimeter per second. So this one will be the answer. So I have solved question number 1 to 5 in this class. Now I say everything in Hindi and English, both languages, to the students of हिंदी मीडियम. तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को फिर से एक बार देख लेता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का उपयोग करते हुए, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास उपयोगी हो. पहले तो ये क्लास प्योर इंग्लिश में था, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये उपयोगी था. तो देख लीजिए, आज की कक्षा में मैं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ. आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप यहाँ से देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है. बोलता है कि रेट चेंज ऑफ एरिया आपका दिया हुआ है किसी सर्कल का विथ रेस्पेक्ट टू आर, और आपको पूछ रहा है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए बाई डी टी आपको पूछ रहा है, आपका आर दिया हुआ है. तो लेट्स सी, जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आपका ये आपका फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट, प्रश्न से ये स्पष्ट पता चल रहा था आर बराबर 3 सेंटीमीटर है. डी ए बाई डी आर आपको पूछ रहा है. एरिया के फॉर्मूला को रिकॉल किए हैं, इसीलिए लिख दिया वी नो दैट, हमको पता है. और डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर किया गया है, डी ए बाई डी आर. अगर आप क्लास में शुरू से होंगे तो पूरा डिटेल्स इंग्लिश मीडियम में मैंने इसको किया. फिर अब मैंने यहाँ पर आर का वैल्यू पुटअप कर दिया जो 3 है. आफ्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपको डी ए बाई डी आर का वैल्यू निकल गया. सिमिलरली इसके बी पार्ट को भी सॉल्व किया गया है. आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है. डी ए बाई डी आर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. एरिया के फार्मूला को यहाँ पर रिकॉल कर लिया गया है, और नॉन डेरिवेटिव बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव किया गया. डी ए बाई डी आर इक्वल टू इधर 2 पाई आर हो गया. फिर से आर का वैल्यू पुट कर दिया गया जो 4 है, और आफ्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद 8 पाई बाय मीटर स्क्वायर पर मीटर आपका आ गया. ये मीटर स्क्वायर पर मीटर कैसे आया, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और रेडियस का यूनिट यहाँ मीटर है. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट, प्रश्न से यह स्पष्ट पता चलता है डी बी बाई डी टी 8 क्यूब पर सेकंड है, और आपका एक किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है. डी ए बाई डी टी यहाँ पूछ रहा है. वॉल्यूम के फार्मूला को यहाँ पर रिकॉल कर लिया गया, v इक्वल टू एल क्यू. नॉन डेरिवेटिव बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका डी वी बाई डी टी हो गया, और एल क्यू का डेरिवेटिव आपका 3l स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी टी हो गया. वैल्यू पुट कर दिया गया है डी वी बाई डी टी और एल का. एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद डी एल बाई डी टी का वैल्यू आपका 1/54
सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। फिर से फार्मूला को रिकॉल कर लिया गया। सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यही होता है, ए इक्वल टू 6L²। बहुत सारा डेरिवेटिव किया गया विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में dA/dt मिला, राइट हैंड साइड में आपका 12L इंटू dL/dt मिला। एल और dL/dt का वैल्यू पुटअप कर दिया गया है, एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया गया है। तो 8/3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रश्न से स्पष्ट पता चलता है कि dR/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, R इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर है, और dA/dt इसमें पूछा जा रहा है। तो हमको पता है सर्कल के एरिया के फार्मूला को रिकॉल कर दिया गया, बहुत साइड डेरिवेटिव किया गया विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में मिला dA/dt और राइट हैंड साइड में आपका हो गया 2πr इंटू dR/dt। आप वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए हैं r और dR/dt का। तो 2π इंटू 10 इंटू 3 मतलब 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका हो गया। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ किए, प्रश्न से स्पष्ट पता चलता है कि dL/dt आपका गिवन है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एल आपका 10 सेंटीमीटर है, dV/dt आपसे पूछा जा रहा है। वॉल्यूम के फार्मूला को रिकॉल कर दिया गया और फिर बहुत साइड यहाँ डेरिवेटिव किया गया। तो dV/dt इक्वल टू 3L² इंटू dL/dt आपको मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इंटू एंड dL/dt वैल्यू पुटअप कर दी। आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन आपको मिल गया 900 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किया गया। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट आपका dC/dt पेरीमीटर का रेट चेंज आपका दिया हुआ है पर सेकंड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया रेडियस आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, dA/dt आपसे पूछा जा रहा है। सर्कमफेरेंस के फार्मूला को रिकॉल कर दिया गया, बोथ साइड आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी फाइंड आउट किया गया। तो इधर आपका dC/dt हो गया, इधर आपका 2π और r का डेरिवेटिव dR/dt हो गया। dR/dt का वैल्यू यहाँ देखिए फाइंड आउट किया गया है, इसलिए dC/dt का जो वैल्यू दिया था पुटअप कर दिया, 2π लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो आपका dR/dt इक्वल टू 5/2π सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। फिर से एरिया के फार्मूला को रिकॉल कर दिया गया, A इक्वल टू πr²। बहुत साइड फिर से डेरिवेटिव कर दिया गया विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में dA/dt मिला और राइट हैंड साइड में आपको 2πr इंटू dR/dt मिला। वैल्यू पुटअप कर दिए हैं r और dR/dt का। तो आपका dA/dt इक्वल टू आपका मिल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इन दिस वे, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में 5 प्रश्नों को हल किया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ जेईई मेन और एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उनको हेल्प करेंगे। तो नो आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास, मैं इस क्लास को ओवर करने जा रहा हूँ। होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर, ये आपका यूजफुल हो जाएगा स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो स्कूलिंग स्टूडेंट मतलब साइंस फैकल्टी के जो है या साइंस स्ट्रीम के हैं। आपका जेईई मेन और एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए भी ये आपका उपयोगी होगा, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में ये हेल्प करेगा। तो माय नेक्स्ट क्लास विल बी रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ सम और रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्लास होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।